hope you all are at home and you're safe, because now that COVID-19 cases have also reached Jamshedpur, so we need to be extra careful in our whereabouts, where we are going and how we are going outside. Alright, okay, so coming back to our book, I think today we will be able to complete the chapter. We have only 2 pages left, 2 sides of the pages. Alright, so let us begin. In the last class, we discussed about how the author, though he was inside the swimming pool and he was drowning, but somehow he was saved by another person, and as he came out of the water, he just pictured himself that another man was there along with that 18-year-old boy, and they were talking to each other, and the 18-year-old boy was being scolded because he did such a foolish thing. But after that, we studied that the fear of water, the terror which this water had produced in the author's heart, that remained for a very long time. Whatever he used to do, no matter if he used to go for fishing or for boating or any water sport or any other thing, he used to experience that similar fear which he experienced when he was drowning in that swimming pool. So we got to know that even after a lot of even after many years, after a lot of trying, that fear was still there. And it was then the author decided to overcome his fear. Because in the last lecture I told you all that in the further lecture, in the next lecture, I will discuss the ways author uses or author takes up to overcome his fear of water. Alright, so today we'll discuss what are those ways through which he'll overcome his fear of water. Okay, so please turn to page number 28 of the complete English translation. The book is also on the screen as well. Page number 28, the first paragraph of that page. I used every way I knew. You can see that? Alright. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. So what are we seeing here? That no matter whatever way he tried, no matter kitna bhi wo try kar liya, kitna sara ways try kar liya, but that fear would always used to come and grip his heart, firmly in his grip, matlab firmly, tightly. Grip, hold. तो आके कस के जकड़ लेता था वो fear author को. 1 October, finally 1 October, he's saying finally, 1 October is not 1st of October, so many of you all might get confused. 1 October means one, जैसे one day बोलते हैं, once upon a time, one day this happened, 1 year this happened. तो 1 year first year नहीं होता, 1 year मतलब कोई भी एक year था, वैसे ही कोई भी एक दिन था, वैसे ही 1 October, that is different साल है, 2018, 19, 20, 2000 चले आ रहा है, उतने साल में से कोई भी एक अक्टूबर का महीना, कोई सा भी अक्टूबर का महीना, कोई भी साल का अक्टूबर का महीना, he decided 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. So he decided कि अब बहुत हो गया है, वो fear of water मेरे अंदर से जा नहीं रहा है, I am unable to do all my things, all my sports, all my adventurous things, he's unable to do all of that. So then he decided that he should learn to swim. अगर उसको swimming आ जाएगा तो वो डर जो है वो completely वो हटा सकता है. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held onto the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. Alright, so let me just read in one go and then I'll explain. Keep seeing on the screen, those who don't have the text, and those who have, just keep looking on the text. And we went back forth, till here I've done. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale.
and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. So here in this entire paragraph, just mark there and write, this is his ways to overcome his fear of water. Or you can just write stage 1. This is the stage 1. There are 3 stages in the ways he overcomes his fear of water. This is the first stage when he hires an instructor. Okay. And then after that, what happens, we'll see. So this is the instructor lesson which he is getting, this entire paragraph. And after that also, you'll see a bit of it. What the author is telling us here, that 1 अक्टूबर महीने की बात है जब हम डिसाइड किए that हमको अब स्विमिंग सीख लेना चाहिए और हम एक इंस्ट्रक्टर हायर किए. वो इंस्ट्रक्टर हमको पूरे वीक में 5 days सिखाता था. Look at those lines. I'm also marking on the screen so that you can understand where it is. I went to the pool and practiced 5 days a week. An hour each day. मतलब हर दिन 1 घंटा वो स्विमिंग सीखता था and हफ्ते में 5 दिन, which means हफ्ते में 5 घंटा. The instructor put a belt around me. So now, as I am explaining you all, you can also imagine in your head what I am trying to tell you. और तुम picture बनाओगे, so it will be easy for you all to understand. Imagine the author and instructor उसके waist के पास, कमर के पास एक belt बांध देते हैं. It is kind of a rope and rope is attached to that belt. Belt बांधा रहता है and एक rope को belt से attach कर दिया जाता है and वो rope ऐसा रहता है कि वो कभी भी उसको आगे पीछे टान सकता है इंस्ट्रक्टर. And then he used to put him inside the water. यहाँ पे क्या लिखा है? See, we went back and forth the pool, hour after hour, day after day, week after week. So हर दिन, हर घंटा, हर हफ्ता इसको ये सेम चीज उसको स्विमिंग सिखा रहे थे with the help of that precaution. वो preventory measures था. On each trip across the pool, a bit of panic seized me. Obviously, इतना बड़ा हादसा हुआ था author के साथ. So that fear was so strong that it was there in his heart, and every time he tried to overcome it by trying to learn swimming, वो डर कहीं ना कहीं आके उसको the panic seized me. I told you the meaning of this word, held me. Seized है तो held हो जाएगा. Hold का past tense, held. तो पैनिक जो है, जो बकाहट या डर है, वो उसको जकड़ लेता है, वो उसको पकड़ लेता है. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Imagine instructor rope पकड़ा हुआ है और वो धीरे से छोड़ रहा है so that author पानी के अंदर जा सके. जैसे the moment author used to go inside the water, some of the old terror returned and my legs froze. तो जैसे ही उसको पता था कि कोई हमको पकड़ा हुआ है, but then जैसे हल्का सा भी ढीली दिया जाता था, छोड़ा जाता था, he used to go inside water and that same old terror used to return, that his legs began to freeze. मतलब वही जो हम लोग पढ़े थे, जितना वो struggles था, उसका legs freeze हो जाता है, paralyzed feel करता है, rigid feel करता है and all those things. It was 3 months before the tensions began to slack. Slack, SLACK, cut down. तो 3 महीने के बाद जो टेंशन था, जो परेशानी हमको फेस करना पड़ा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होना शुरू हुआ. The tension began to slack, to cut down. मतलब थोड़ा कम होना शुरू हुआ tension. Then he taught me to put my face under water and exhale. Okay, so then the instructor taught the author how to put his face under water and exhale. Then again take out outside the water and inhale. Obviously तुम पानी के अंदर जाके सांस लोगे नहीं, तुम मर जाओगे, because नाक में पानी जाएगा and we are not fishes. गिल्स नहीं है हम लोग के पास जो लोग आराम से पानी के अंदर सांस ले सकते हैं. हम लोग के पास लंग्स है एंड लंग्स को एयर चाहिए, पानी नहीं. तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि हमको 3 महीने के बाद जब टेंशन थोड़ा कम होना शुरू हुआ और इंस्ट्रक्टर हमको सिखाया कि कैसे मुंह को पानी के अंदर डालते हैं, चेहरा को, और या सिर्फ मुंह को पानी के अंदर डालते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे. यू हैव सीन इन मूवीज एंड अदर ऑन टेलीविजन एज वेल हाउ स्विमर्स स्विम. एंड बाहर निकाल के फिर इनहेल करते हैं ताजा हवा, फिर अंदर जाके धीरे स्टेप बाय स्टेप सांस को रिलीज करते सो दैट टाइम मिले और इंसान स्विम कर सके. यहाँ तक आई गेस इट्स ओके. ऑलराइट, I'll also give the summary at the end of the lecture, as I complete the chapter. It's properly written there.
you will be able to understand. Any doubt, comment section is available. I've given my mail ID. You can ask me anytime. Obviously not after 12 midnight and not before 7 o'clock in the morning. So just keep that in your mind. And you can ask me any question, any doubts, whatever you have. I'll be here and I'll try to answer as much as possible. In fact, the entire questions will come to me. I'll try to answer them all. Okay, so do not get worried if you're unable to understand. एक दो बार लेक्चर सुनोगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा. Okay, so now see. So पहला तो सोचो तुम कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको बहुत हेल्पलेस लग रहा था, तो वो डिसाइड करता है कि हम इंस्ट्रक्टर बुला के स्विमिंग सीखेंगे. फिर वो एक इंस्ट्रक्टर अक्टूबर के महीने में बुलाता है. अक्टूबर के महीने में वो स्विमिंग सीखता है. 5 दिन हफ्ते में 1 घंटा पर डे. ओके, सीखता है किसी तरह. बट जब भी वो पानी के अंदर जाता उसको वो टेरर वापस आ जाता था एंड हिज लेग्स बिगैन टू फ्रीज. उसका लेग्स काम नहीं करता था. आफ्टर 3 मंथ्स, तो अक्टूबर के बाद 3 मंथ्स कितना होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी. तो तुमको मंथ याद रखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर. आफ्टर 3 मंथ्स दैट्स इनफ. सो आफ्टर 3 मंथ्स जब उसको टेंशन थोड़ा कम होने लगा, कम डर वापस आने लगा, तब उसको इंस्ट्रक्टर सिखाते हैं हाउ टू पुट हिज माउथ इनसाइड द वाटर एंड रिलीज द एयर and then again take out and inhale the air. All right. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shred part of the panic and panic that seized me when my head went underwater. Shred, यहाँ पर लिखा हुआ है bit by bit, I shred part of it. Shred बोल सकते हो हटाना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलते हैं कोई चीज को पेपर है, श्रेड कर दिए, एज इन टुकड़ा टुकड़ा में, छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग उसको तोड़ दिए. तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? बट बिट बाय बिट श्रेड. श्रेड हम छोटे छोटे टुकड़े में, मेरा जो डर है वो टूटता गया और वो निकलता गया हमसे बाहर. ठीक है. सो श्रेड कैन बी कट इन टू पीसेज. तो यहाँ पर उसका जो डर है वो टुकड़े में बट के उससे बाहर निकल रहा था. ओके, वही यहाँ पर लिखा हुआ है. फाइन. Now see the next paragraph. So यहाँ तक सबको clear है. What was his method to overcome his fear of water? He tried to learn swimming, and how he was learning we can see here. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. So first step था कि बेल्ट बांध के, रोप बांध के उसको बैक एंड फोर्थ करके पानी का एक एक्सपीरियंस देना. Second, to put his mouth under water after 3 months. Third, he held me at the side of the pool and asked me to kick with my legs. For weeks I did that. तो हफ्तों से हम सिर्फ एक ही काम किया, that is to kick my legs. At first my legs would refuse to work. तो बहुत बार हम लोग होता है कि अब मेरा पैर जवाब दे रहा है, अब मेरा हाथ जवाब दे रहा है. सो जब कोई नॉर्मल इंसान सुनेगा वो बोलेगा जवाब दे रहा है, क्या जवाब दे रहा है? विच मीन्स इट इज नॉट अलाउिंग मी टू वर्क. मेरा हाथ इतना दर्द दे रहा है या हम काम नहीं कर पा रहे. सो मेरा हाथ हमको जवाब दे रहा है, जिन हाथ अलाउ नहीं कर रहा है कि हम काम कर सके. सिमिलरली यहाँ लिखा है कि हम को नेक्स्ट स्टेप सिखाया गया साइड ऑफ द पूल में जाके टू किक अ लॉट. आई ट्राई टू डू ऑल ऑफ दैट, बट देन शुरुआत में माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क. मतलब मेरा लेग्स काम नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली वो डर, वो टेरर के वजह से. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड. आई टोल्ड यू ग्रेजुअली मीनिंग स्टेप बाय स्टेप. तो धीरे धीरे वो रिलैक्स होते गया. दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. सो इज सेइंग कि बहुत बार होता है कि हम लोग अपना हाथ खोलते हैं, चलो लिखो, वैसा हम लोग कमांड नहीं करते हैं. बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग दैट आई एम आस्किंग माई हैंड टू, और आई एम थिंकिंग इन माई हेड कि हाथ चलो पानी का बॉटल पकड़ो, हाथ चलो तुम पेंसिल उठाओ. सो आई एम थिंकिंग इट्स हैपनिंग, विच मीन्स आई एम कमांडिंग देम एंड दे आर लिसनिंग टू मी. सो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट स्टेप वही था, टू गो टू द साइड ऑफ द पूल एंड किक एज मच एज आई कैन, बट आई कुडंट बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम. The terror problem which I had, and my legs were not even replying. वो legs काम नहीं कर रहा था. But then धीरे धीरे I started commanding them. Okay. Thus piece by piece he built a swimmer. So instructor क्या कर रहा था? धीरे धीरे टुकड़ा को जोड़ जोड़ के पजल के जैसा एक स्विमर बनाया. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. Integrated मिला हुआ, sum up of everything. So जितना वो कर चुका, वो अपना जो भी उसको रिएक्शन या जो भी उसको
अपना इनपुट देना था, वो सारा कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर दिया एंड धीरे धीरे करके he built a swimmer. He put them together into an integrated whole. In April, he said, now you can swim, dive off and swim at the length of the pool, crawl, stroke. So, यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि शुरुआत कब हुआ था, अक्टूबर से 3 महीने के बाद वो अपना सर पानी में डालने के लिए रेडी हुआ. अप्रैल में, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5th जो 5 महीने बाद ही फाइनली लर्न हाउ टू स्विम एंड द इंस्ट्रक्टर सेड कि तुम अब स्विम कर सकते हो. I did. The instructor was finished, but I was not finished. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि इंस्ट्रक्टर was finished, but I was not finished. What does this mean? Well, but for example, a very beautiful and relatable example which I am going to give to you right now is after I give you the lecture through these video online classes, my job is done. I am done here. My job is finished here, but your job is not finished. Why? Because you need to listen to the lecture, understand the lecture, prepare notes if you want to, do the assignment, then your job will be finally done. Okay, so यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर अपना काम करके चला गया, कि हमको बता दिया कि देखो करना कैसे, सीखना कैसे, स्विम कैसे करना है, बट I was not finished because हमको अभी तक अपने में कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं या नहीं. I still wondered if I would be terror stricken when I would go alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror mom would return, but now, old terror would return, but now. Sorry. Just let me read it again. But I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here's to you, look. So here we understand that the author was saying that okay, fine, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, पर मेरा काम खत्म नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in pool, because अभी तक वो जितने भी बार पूल में एंटर किया है, who was there with him? The instructor was there with him. वो आज तक अकेले कभी ट्राई नहीं किया, वो आज तक कभी अकेले, अभी तक आफ्टर दैट स्विमिंग पूल इंसिडेंट वो ये नहीं जाना दैट वेदर अकेले होने से उसके साथ क्या हो सकता है. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. Tiny vestiges, kind of in small bits. अभी भी वो terror वापस आ रहा था. Okay, in despite of all those practices which he did, उसका motive क्या था? सिर्फ swimming सीखना नहीं. To overcome that fear. Please understand. The motive of the author was not to learn swimming, or I should say, was not only to learn swimming. But his main focus was to overcome his fear of water. वो water से जो उसको वो डर लग चुका है, उस fear से बाहर निकलना. Okay, but now I could frown and say to that terror trying to scare me. Well, here, okay, so he's saying कि अच्छा, हम मेरे अंदर वो थोड़ा थोड़ा terror का या डर का particles आता था, but then हम पलट के बोलते थे कि ओ तुम हमको डराने की कोशिश कर रहे हो, डरा के देख लो, तुम डरा सकते हो, लो देखो. एंड ही यूज्ड टू स्विम अगेन टू द अदर एंड ऑफ द पूल. सो कहीं ना कहीं वी अंडरस्टैंड दैट वो डर वापस आ रहा था, बट ऑथर वाज एबल टू ओवरकम दैट फियर. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. तो अक्टूबर से शुरू किया, 3 महीने बाद वो पानी में अपना सर डाल पा रहा था और उसको एक्सेल और इनहेल सिखा रहे थे इंस्ट्रक्टर. फिर अप्रैल में जाके वो सीखता है, जहां पर उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर कि अब तुम अप्रैल में तैयार हो चुके, नाउ यू कैन स्विम, डाइव एंड यू कैन स्विम अक्रॉस. जुलाई तक वो फिर भी ट्राई करते रहा. अप्रैल तक उसको इंस्ट्रक्टर छोड़ के चले गए, पर अप्रैल से लेके जुलाई तक, मई जून जुलाई, ये 3 महीना वो खुद सीखा, बट स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. I was not sure that all the terror had left. So still he had this feeling कि नहीं कुछ terror बचा हो सकता है. अब वो कैसे जाएगा, क्या जाएगा?
वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. Why I'm saying this next class? Because suddenly I remembered that many of you are having problem in writing assignments, and the important questions which I'm giving you all in the description box, in the link of the description box, not in this one, in the last video lecture for the chapter. I would suggest please do not answer those questions right now. First learn how to write, and that you will do by writing the assignments, first in points then in paragraph. Alright, so next class I'll just finish this chapter, which will take me around 5 to 10 minutes, and then I'll explain you all how to write an answer. I'll take a question of the assignment, the previous assignment, and I'll explain you how to write first in points and then in paragraph. So that everybody who are having problem, many feel embarrassed to ask, and many do not want to publicly ask their teachers. So it's perfectly fine. I understand. I will try to look into this matter in the next video lecture, and then itself I'll complete the chapter, and then after that we'll see what else we'll do further. Alright, so till then please keep learning, please keep attending the lectures, because I don't know till when this lockdown is going to stay, but studies have to go on, and you need to be thorough with your subjects. Alright, okay, so stay safe and stay home. Thank you.